What's up guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kaswan Dev here. तो guys अभी हम आए हैं एक सुशी रेस्टोरेंट और ये है मेरा दोस्त और हम दोनों आज सुशी जो जैपनीज़ ट्रेडिशनल फूड है वो आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो व्लॉग में बने रहें। तो अभी हम जा रहे हैं एक जैपनीज़ सुशी रेस्टोरेंट और आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि कौन कौन सी सुशी होती है। क्या मैं भी एक्चुअली आज पहली बार जा रहा हूँ तो इसको सब पता है, तो ये मुझे ले जा रहा है। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आज। So we'll explore the sushis today. Yeah, I'll explain details about these sushis. Yeah. तो मैं तो भाई खाने check वाला it नहीं out. हूँ बिकॉज मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो यही एक्चुअली टेस्ट करके बताने वाला है। तो गाइज ये है सुशी रेस्टोरेंट। तो अभी अंदर चलते हैं थोड़ी देर में। अभी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बिकॉज भीड़ है ना अंदर, इसलिए। तो गाइज़ अभी हमारा दोस्त आपको बताएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मतलब मैं पहली बार आया हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो इससे पूछते हैं। सो हाउ डू वी यूज़ दिस? How do you use this? Okay. So how you order this? You first press this. ओके And there are many types. This is a fish called maguro. ओके And there are many parts within maguro. There are Okay. 3 parts. Like if we see there are okay. Otoro toka chutoro. Yeah, that's chutoro. And otoro. ओके They are different parts and they taste different, slightly different. Yeah, that's the thing. And there are other types like salmon and ebi. What do you want to choose? What do you want to order first? I'm vegetarian, bro. Yeah, not fish. No, Fish, no. no, Why? I'm vegetarian. No meat, no fish. I know. यार but- ये सही होता है इनके लिए। मतलब कि मैंने बोल दिया मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये फिर पूछेंगे कि फ़िश, तो यार फ़िश भी तो नॉन वेज में ही आती है। What is that? Yeah, this is tea. Ocha. Oh. Ryokucha, you could say. Can I see? तो गाइज ये ओचा है, मतलब जो जापानीज ग्रीन टी होती है वो है। इट्स अ ग्रीन टी, राइट? इन जापानीज इट इज़ कॉल्ड ओचा। तो वी मिक्स कर दी। Yeah, that's for you. थैंक्स। So what is this? So this is salmon. Okay. Yeah. It's quite. The taste is creamy, I would say, and it's sweet. It's sweet. Yeah, kind of tasty. तो गाइज ये जो ऊपर का रहता है, इट्स फिश, राइट? इट्स अ रॉ फिश। Yeah, raw fish. तो गाइज ये रॉ फिश होती है, मतलब इसको पकाया नहीं जाता, इसको सीधा ही चावल रहता है उसके ऊपर सर्व किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है जापानीज़ लोगों को। Without fish. तो गाइज जो तरीका होता है जापानीज़ फूड खाने का वो है चॉपस्टिक से। Yeah, so you So- grab it like this. I'm not also good at it, but so that's a soy sauce. And it's now time to eat. यस, तो ये है सुशी। हाउ इज द टेस्ट? So first you don't feel anything, but after that, slowly you feel the creaminess, and then salmon is a sweet fish. स्वीट फिश। Yeah. हाँ, ओके। So it's really good, tasty. It's good for children also. किड्स। Yeah, kids. तो गाइज ये इसमें एक और ऑर्डर किया है। Yeah. व्हाट इज दैट? The next one is this one is shrimp. श्रिम्प। ओके। Actually, there are fried, not fried, but there are cooked one, Okay. boiled one. I mean, और द श्रिम्प इज बॉइल्ड। yeah. There's one with boiled one, and there is a raw one, and this one is a raw one because I like this more. And just same thing, you eat it. And then you take it out. What is the- that? That's a tail. You have to Oh. take it out. Okay. And my father can't eat this because of allergy. People have allergies. Yeah, some Wow. people, Okay. but I don't have, so I could eat. To shrimp? I mean for The this. raw shrimp. Okay. And what is this? That's maguro. Maguro? Okay. So it's all fish. It's all same fish. Same fish. Yeah. This is otoro. Okay. That's chutoro. That's shotoro. And I think this is a fried one, like not cooked one. Cooked one. Not fried. Okay.
and that's maguro no tataki, which you cut tiny, and then mash it up. It's like mashed potato, but it's just a maguro. तो गाइस जो ये सुशी है एक्चुअली वेजिटेरियन है। मैंने पूछ के मंगाई थी। जो इसके बाहर का ये कवर है ये तो नोरी होती है, तो ये तो वेजिटेरियन होती है। और जो इसके अंदर फिलिंग है, वो स्टफिंग है, वो है राइस की, और जो ककड़ी रहती है उसकी। तो ये कंप्लीट वेजिटेरियन है, और इसको मस्त अपना सोया सॉस में डिप करके खाओ। तो गाइज अभी जो इसने ऑर्डर किया है, व्हाट इज इट कॉल्ड? Yeah, so it's a egg. It's an egg of codfish. It's Fish, called okay. ikura in Ikura. Japanese. So, yeah, if you chew it, this splashes, and you just taste all these eggs. Yeah, and then you eat. Yeah, it splashes. Tastes good, really well. तो गाइज ये है जापानी पकोड़े, मतलब प्याज पकोड़े नहीं है, ये चिकन पकोड़े हैं। Yeah, we call it karage. कड़ागे। Actually, this is a sushi restaurant, but Japanese usually like karage, so we could also, order a side menu in here. Yeah, you have French fries, octopus fry, and that's a crab fry. Crab, okay. And that's a chicken, fried chicken. Okay. There are others also. तो गाइज ये था सुशी रेस्टोरेंट का एंड, और अभी चलते हैं कुछ मीठा खाने। How was the sushi, bro? Well, it was good. It was good, right? Yeah. तो गाइज अभी एकदम रात हो चुकी है, और हम ऐसे ही व्यू एंजॉय करने आए थे यहाँ पर। और जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो अभी मेरा दोस्त बता रहा था कि ये पूरा होटल है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस होटल? Prince Hotel. प्रिंस होटल। मतलब योकोहामा में सबसे बेस्ट जगह रुकने के लिए, मतलब चारों तरफ का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर आप आना चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हो। तो गाइज़ आज का ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सुशी रेस्टोरेंट में। मैंने तो यार बस वो चावल खाए थे, पानी पिया था, और कुछ भी नहीं किया। और मेरा दोस्त अभी यहाँ पे ही है पीछे। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूँगा जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।